Good morning, class. So, what we are trying to do today is OLQs, or what we call as officer-like qualities. For anyone to get selected throughout SSB, it is very important to possess these qualities among them. So, I will be briefly sharing screen. Uh, yeah, I think the PPT is visible. So, currently, what I'm going to talk about are the officer-like qualities. I hope you guys are noting it down as well. So, officer-like qualities can be understood as any of the behavioral qualities which are expressed through their speech, their actions, and also indicate what thought process an officer has. So, these are expected out of every officer that goes for SSB or who wants to get selected in India. These qualities are not something that is optional. They are mandatory that an officer who's getting selected should fulfill all of these criteria and all of have all of these qualities to some level or the other. Okay? So when we are talking about these qualities, it is not something that will be gained in an immediate manner. These qualities are generated through our day-to-day experiences, our day-to-day actions, and the small steps that we take, which inculcate over years to form our personality and our being. Okay, so if a person says he's honest and he has no quality, no experience that supports this action, it is high chance that this quality won't be reflected in the SSB throughout various tests and measures, and the person would not be able to get through SSB. Okay, so a few qualities among these are really difficult to gain. A person cannot gain these qualities from just learning from someone. They have to get it through their experience. Okay, and when I'm talking about these 15 or 16 qualities that you mentioned, these qualities are divided into four factors. So these factors uh, get categorized in four manners.
Sorry for the disturbance. Uh, let's continue with it. Yeah, we left at four factors, right? Just give me one brief moment. The four factors that we were talking about who has social adjustability. Do you know what social adjustability is? I hope you do, because when we are talking about social adjustability, we are talking about an ability of an officer to not just understand what is going on in their surrounding, but also I hope my screen is visible now.
Okay, I guess I taught a lot, but unfortunately, the call went on mute. I am sorry for that disturbance. Okay, I'll brief up everything fast so we do not lose on anything. We started with the OLK factors, which started with planning and organizing, social adjustability, social effectiveness, dynamicness. Planning and organizing, why is it important? कि आपके पास resources allot किए जाते हैं as an officer, and it is your responsibility to make sure कि उन resources का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए. अगर आपके पास प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज नहीं है तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर द वन टू अलॉट रिसोर्सेज एंड यू आर द वन टू फंक्शन. ओके. अब सोशल एडजस्टमेंट में क्या है कि आप अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग किस्म के लोगों के साथ काम करोगे. तो अगर आप सोशल एडजस्टमेंट में अच्छे नहीं हो तो आप लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाओगे, आप उनके साथ अच्छा काम नहीं कर पाओगे. तो यू नीड टू बी वेरी अडेप्ट टू सोशल सिचुएशन. ठीक है. व्हाट इज सोशल इफेक्टिवनेस? यू विल बी सेंट इनटू डिफरेंट डोमेन्स ऑफ द फील्ड. यू विल बी सेंट टू डिफरेंट places. So there, in order to express yourself, in order to put your points, and in order to work in a certain fashion, you should be socially effective. You should know what are the norms of the culture, how people function. Then, so therefore, you will be able to provide adapt orders and dynamic. What is dynamic? A person should be adaptive. They should change as per the need of the situation. They should be fast in making decisions. They should update themselves to the needs of the market. Okay. And when we talk about OLQs, isme we are having 15 OLQs which are assessed throughout different tests during the SSB. We'll cover each one of them in a fast manner. Okay. So first is effective intelligence. Effective intelligence में हम क्या बात कर रहे हैं? Competency of a person to tackle practical problems and find out the best effective solution using all the available resources. तो ठीक है, पहली चीज क्या है? कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस एक पर्सन की एबिलिटी होती है किसी बिहेवियर को एग्जीक्यूट करने की अपने स्किल्स के साथ. क्यों एग्जीक्यूट करने ये बिहेवियर्स? टू टैकल सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. व्हेन यू आर सर्विंग इन द डिफेंस देयर माइट बी डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट माइट कम टू यू. देयर माइट बी डिफरेंट सिचुएशंस व्हिच विल कम टू यू. तो आपका काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू एनालाइज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इट इज, और उस प्रॉब्लम की वजह से कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं, किस टाइप के लोग इफेक्ट हो रहे हैं, और मेरे को कब तक ये सॉल्व करनी है. सो यू शुड बी एबल टू मेक दीज डिसीजंस वेरी फास्ट. एंड इन मेकिंग दीज डिसीजंस यू हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट, कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनको बहुत अच्छे से यूज करो. कि आपको अगर मैंने 50 ऑफिसर्स दे रखे हैं आपके अंडर कमांड में, और उस काम के लिए 50 लोगों की जरूरत है, ऐसा ना हो कि आप 30 लोगों को भेज दो, 20 लोगों को छुट्टी पे भेजो. नहीं, यू शुड बी एबल टू यूटिलाइज ऑल ऑफ द रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर, एंड यू शुड बी एबल टू टेक आउट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फ्रॉम इट रादर देन सेटलिंग फॉर अ मीडियोकर आउटकम. समझा? ये है इफेक्टिव इंटेलिजेंस. ठीक है. कमिंग टू द रीजनिंग एबिलिटी, इट इज अप्लाइंग लॉजिक और रीजनिंग और रैशनल. रैशनल क्या होता है कि एक स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज किस लिए कर रहे हो, या फिर उसके पीछे का जो है तथ्य क्या था, कि उस पे पीछे बेसिस क्या था, उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस और थिंकिंग क्या था, और वो कितना प्रैक्टिकल था, ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ. ठीक है. एंड व्हेन सच सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशंस अराइज जहां पर आपको इमीडिएट डिसीजन लेना हो, तब ये रीजनिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है. कि आप सारे सॉल्यूशंस को एक तो एनालाइज कर रहे हो, आप सारे सॉल्यूशंस को इवेल्युएट कर रहे हो कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, हर सॉल्यूशन का प्रो और क्या कौन क्या है, हर सॉल्यूशन का बेनिफिट क्या है, आप ये सारी चीजें देख रहे हो. एंड देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यूटिलाइज द बेस्ट सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट. एंड उसके पीछे फिर आप रीजनिंग देते हो कि मैंने अगर यहाँ से जाने के 3 रास्ते थे और मैंने कोई पर्टिकुलर रास्ता चुना, तो मुझे रीजनिंग देनी होगी कि व्हाई डिड आई चूज दैट स्ट्रीट. उसमें ट्रैफिक कम होता है, वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा है कि हमें वहां पर शॉप्स वगैरह ज्यादा मिलेंगी, और हम अपनी जो बेसिक नीड्स है उसका ज्यादा उस पर ख्याल रख पाएंगे. द सोल्जर्स वुड बी इन अ गुड स्पिरिट वाइल वी आर गोइंग फ्रॉम देयर, इट इज मोर सेफ. तो ये सारी रीजनिंग्स आपको देनी होगी आपके किसी भी पर्टिकुलर एक्शन के ऊपर, एंड दैट इज रीजनिंग एबिलिटी. And when we are talking about organizing ability, when you are posted, you are going to go for SSB to get selected for a post of an officer. An officer does not only follow orders, they have to provide orders in a certain manner, जहां पर वो खुद सारी चीजें प्लान भी कर रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो भी देख रहे हैं. एंड इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एंड यूटिलाइज द रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड टू यू, यू नीड टू हैव रियली गुड एबिलिटी इन कि आप कौन से रिसोर्सेस किस वक्त में किसको अलॉट करोगे, उसका फायदा किस तरह होगा. ये सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए, और आप ही होगे
जो अपनी स्क्वाड्रन का डेली शेड्यूल वगैरह क्यों एक स्पेसिफिक मैनर में होना चाहिए, कितना ऑर्गेनाइज होगा जिससे इफेक्टिविटी बढ़े। ठीक है, it is not a person who studies for 16 hours, 17 hours a day that succeeds. But it is a person who can make sure कि उनके अगर 8 घंटे पे बैठ रहे हैं, 8 घंटे में मिनिमम 7 घंटे उनके अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो पढ़ाई हो रही है, वो उनके जहन में उतर रही है। हाँ, तो ये लोग ज्यादा इफेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना शेड्यूल अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, इन्होंने अपनी रिवीजन पैटर्न्स को कंसिस्टेंट रखा है। तो इनके पास भी अवेलेबल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ टाइम उतने ही हैं जितने बाकी लोगों के पास है, लेकिन इनकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी अच्छी है, इसीलिए इनके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमने जिस चीज की बात की थी ना, कि अगर आपके थॉट्स बहुत अच्छे भी हैं, जब तक आप उसको एक पर्टिकुलर मैनर में express नहीं कर पाते हो, जब तक आप उनको जता नहीं पाते हो कि आप सोच क्या रहे हो, तब तक आपके थॉट्स का होना बाहर की दुनिया के लिए नॉन एग्जिस्टेंस। कि आई हैव अ रियली गुड आइडिया कि हाउ वी कैन कर्व द पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया, किस तरीके से हम गरीबी हटा सकते हैं। ये आइडिया मेरे दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से है, बट आई एम नॉट एबल टू कन्वे टू द पीपल अराउंड मी, टू द सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, टू द डिफेंस, टू द मिनिस्ट्री। So people who are responsible for the change are not even understanding my idea because I'm not good with expression. तो उसका कोई फायदा होगा क्या? नहीं, वो आइडिया मेरे दिमाग में रह जाएगा, बट उसका कोई इम्प्लीकेशन दुनिया में नहीं है। तो इफ यू वांट कि आपके कॉमरेड्स आपकी बात को समझे, और आप जहाँ पे जिस फील्ड में काम कर रहे हो वहां के लोग आपकी बात को समझ के उसके मुताबिक काम करें, तो you need to have really good expression of whatever you are thinking, कि आप रेलिवेंट एग्जाम्पल्स यूज कर पाओ। आप जो लैंग्वेज है उसके डिस्पाइट कि अगर मेरे को वहाँ की स्टेट लैंग्वेज नहीं आती, अगर मैं किसी अदर सेकेंडरी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जैसे मैं हूँ महाराष्ट्र में, वहाँ जहाँ पर जो है रीजनल लैंग्वेज मराठी है, but I do not know Marathi, so I'm speaking in Hindi. So Hindi is a second language for them. But still, I am able to communicate whatever I want in the most efficient manner. मेरे comrades भी समझ रहे हैं, जिनसे बात करना चाह रहा हूँ वो भी समझ रहे हैं, because all of the things that I utilize, the resources, that is my body language, the examples, the way I speak, my tone, all of these matter a lot. So how well you are able to articulate this, how well you are able to utilize this matters a lot, and that is your power of expression. When we talk about social adaptability क्या है? किसी भी पर्सन की एबिलिटी कि वो अपने सराउंडिंग्स को, अपने साथ जो लोग हैं ज्यादा, और उनके कलीग, सुपीरियर, मतलब पूरा जो सिस्टम है जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर पाए। अगर मैं किसी दूसरी जगह पर भी जाकर काम कर रहा हूँ, सो आई शुड बी वेरी अडेप्टेबल टू देयर कल्चर, टू देयर फंक्शनिंग सिस्टम, टू देयर रिपोर्टिंग सिस्टम, ताकि मैं जल्दी से जल्दी वहां पर अकोमोडेट होकर जल्दी से जल्दी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। Now, why is this important for an officer? Because they are usually transferred from different places within different cultures, within different terrains, within different parts of the country, and they have to adapt quickly because a defense function cannot be strained or kept inactive for a long time. They have huge responsibilities on their shoulder, and वो जहाँ भी जा रहे हैं वो वहां से बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाने चाहिए। वहां पर जो भी जरूरत है उनको समझकर अपनी और अपने स्क्वाड्रन की पूरी फंक्शनिंग को चेंज कर कर उनके साथ अलाइन करने वाले होने चाहिए। समझा? दैट इज सोशल अडेप्टिविटी। अगर सोशल अडेप्टिविटी नहीं होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू फिट इनटू अ सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, दैट इज सोशल अडेप्टिविटी। ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉपरेशन। ये जो फ्रेज है वन मैन आर्मी, ठीक है, इसको मिसनॉमर कहा है कि ये असल में आर्मी या फिर डिफेंस में इस तरह काम नहीं करता, क्योंकि यू आर नॉट अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट योर एक्शन। अगर आप ऑफिसर के पोस्ट पे जा रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पूरे स्क्वाड्रन को, आपके पूरे टीम को साथ लेकर चलती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सेफ्टी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शनिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक यूज ऑफ देम टू द मैक्स। तो यू आर द वन हु इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग श्योर दैट योर टीम डज द बेस्ट। ठीक है, एंड टू मेक श्योर यू कैन नॉट बी द वन अलोन डूइंग एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो मैं अकेला इतना पढ़ रहा हूँ कि मेरे 100 नंबर आ रहे हैं लेकिन मेरे टीम में सब लोगों के 20 नंबर आए, तो एवरेज ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, एवरेज पूरा नीचे चला जाएगा, इवन दो आई एम गिविंग माई 100%। सो इट इज नॉट दैट
one person should be taking all the efforts. It is a team effort. It is a overall effort. अगर पूरी टीम अच्छे से फंक्शन करेगी, हाँ, तो अगर कुछ छोटा इशू आ भी जाता है, कोई फंक्शन नहीं कर भी जाता है, तो सबके करने की वजह से दे वुड बी अपलिफ्टेड टू अ सर्टेन मैनर। हाँ, लेकिन अगर कोई एक समझ रहा है कि मैं अकेला बहुत अच्छा कर लूंगा, आई डू नॉट नीड माई टीम फॉर इट, देन दिस इज अ wrong conceptualization. This is a wrong manner to see things. Okay. And that is what cooperation is. You will have to coordinate with your superiors. आपको उनके भी बात समझनी होगी, वो जो orders दे रहे हैं, instructions दे रहे हैं, उसको भी समझना होगा. Then you will have to deliver the same to your team. And आपके टीम को राजी करना होगा कि वो effectively इस पे काम करे, rather than just doing it for the name sake. That is cooperation. Okay. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम चाहते क्या है कि आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हो जहां पर यू आर आंसरेबल नॉट जस्ट टू योर सुपीरियर्स बट द होल कंट्री एज अ होल. हाँ, कि आप जो भी एक्शंस लोगे वो पूरे कंट्री को फायदा भी दे सकते हैं और नुकसान भी. देयरफॉर यू हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर. एंड officers' capacity to take up these duties and execute this task to their fullest. कि मतलब वो आगे बढ़कर ये जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है, ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस या ड्यूटीज मिल रही है, ये जो उनको मिशंस मिल रहे हैं, वो उसको बस एक्सेप्ट ही नहीं करते, उसको पूरी की पूरी तरह अपनाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उसमें बेस्ट रिजल्ट अपना डाले, क्योंकि वो इस काम को अपना समझते हैं. सो जो कोई भी काम को अपना समझ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करेगा rather than टू जस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, उसका रिजल्ट हमेशा बेहतर आता है. अगर मैं एग्जांपल दूं, जो लोग पढ़ाई के जमाने के अंदर when they are studying, when they think studying is for them rather than for pleasing their parents, studying would give them benefits in the future rather than making their parents happy for a particular moment. These people are able to plan what is to be done better in future, how to learn from these their mistakes, and they are able to showcase more improvement than any other type of people. Okay, so this is sense of responsibility. Initiative. Huh. When we are talking about people who are good leaders, when we are talking about officers, to be familiar, uh, ये लोग जो है ना, ऐसी कंडीशंस में डाले जाते हैं जिसका आइडिया किसी को नहीं होता कभी कभी. Nobody knows how to react in that situation. So what separates an officer from his followers or the other soldiers is that he is able to take initiative. He is able to be the one who will start the change. He is able to be the one who will suggest how things can be brought under control. हाँ, अगर मैं आपको किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में भेज दूं जहां पर आपको पूरी सिचुएशन जो है गड़बड़ है, समझो राइट्स हो रहे हैं कहीं पे, एंड यू हैव टू ब्रिंग देम अंडर कंट्रोल, एन ऑफिसर विल नॉट वेट फॉर हिज सोल्जर्स टू थिंक कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से एक्शंस लेना चाहिए. He will not wait for them to take the responsibility. He will be the one who will understand कि मेरी responsibility है, I have been sent here with a mission. He would go ahead and say, this is the course of action we will try to follow. If you have suggestions, he will also inculcate that suggestions. He will be the one to start the discussion, start the brainstorming, start the strategizing of the action plan. Okay, so that is how great leaders take initiative. I think वी आर ऑलमोस्ट डन विद टाइम. सो इसके बाद में जो भी पॉइंटर्स हैं बचे हुए ओएल क्यूज हैं, विल ट्राई टू कवर इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. एंड रिमेंबर, these OLQs are not to be learned and remembered in a form of knowledge. These should be inculcated in our daily life. If अगर ये हमारे बिहेवियर में दिखेंगे नहीं, अगर मैं बहुत बार बोल रहा हूँ मेरे मुंह से कि आई हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये चीज अगर मेरे बिहेवियर में नहीं है, इफ इट इज मिसिंग फ्रॉम माई बिहेवियर, देन इट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर साइकोलॉजिकल टेस्ट्स. ओके, सो इफ यू वांट टू सक्सीड इन एसएसबी, मेक श्योर कि आप हर रोज कोशिश कर रहे हो कि इनमें से कोई ना कोई ओएलक्यू आप अपने जिंदगी के अंदर, आप अपने डेली लाइफ के अंदर लेकर आओ. If you are able to do it, then your SSB will be impressive. Then you'll be able to give real life examples, and that will help you get in. Not learning or memorizing this 15 or 16 OLQs as there. Okay, that's all from my side. I would like to stop sharing the screen now, and yeah, I hope it was a fruitful lecture for all of you. Thank you.